Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you feeling today? I wish you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is an English for grade 5. We are learning unit number 10 and its title is Stop One Heart from Breaking. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this lesson according to this lesson plan. Lecture number 1, we will learn adjective and its degrees, and we will cover a page number 92 and 93. And its next lecture number 2, we will learn about past tense, and we will cover a page 94 and 95. So my dear students and my dear teachers, lecture number 3, verb as an adjective. We will cover up page number 96, question number 6, and verb as an adjective. Next, lecture number 4 is adverb and its types. We will learn about adverb and its types, page number 97 and 98. Yes, lecture 5, pronoun antecedent, and we will cover up page 98, question number 8. Yes, my dear teachers and my dear students, and next lecture, lecture 6, under the title of comprehension, we will cover a page 89, 90 and 91. Lecture number 7, under the title of listening and speaking, we will cover question number 9 on page number 99. Lecture 8A, we will learn about sequence words, and we will cover up question number 10 on page number 99. And our last lecture is lecture 8B. We will learn about invitation, page number 100, and we will learn and question number 11 we will cover up. Okay, my dear students. So now we are going to start our chapter, unit number 10, Stop One Heart from Breaking. So theme of this lesson is ethics and values. Sub-theme is politeness. Yes, my dear teachers and my dear students. So what are you getting from this theme? So this theme is telling us about values, how we can behave with each other in a community. When we are living in a group, so how we should behave with each other. Definitely with love and with politeness. So sub-theme is politeness, kindness, how we have to interact with our community and with the people, those are around us, so how we can behave with them. So we will learn these things in this chapter. Okay, now we are going to start our lesson. Open page number 90. If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. Yes, my dear students and my dear teachers. तो यहाँ एमिली डिकिंसन एक शायरा हैं जो वो क्या बता रही हैं यहाँ, इफ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, अगर मैं कि किसी एक भी दिल को नहीं तोड़ती हूँ, कोई भी अगर मैं रोक सकती हूँ खुद को कि मैं किसी का दिल ना तोड़ूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, सो आई शिल नॉट लिव इन वेन. तो मुझे ऐसे वेन का मतलब होता है like to lose something, when we are not able to get anything, जब हम कोई चीज नहीं हासिल कर पाते कोशिशों के बावजूद भी, तो उसे in vain कहते हैं. तो वो क्या विश कर रही है, वो कह रही है कि अगर मैं किसी एक का भी अगर मैं दिल ना तोड़ूं, किसी एक के साथ भी अगर मैं अच्छाई करती हूं, किसी एक इंसान के साथ भी, तो मैं हरगिज भी बेकार नहीं हूं, मेरा हरगिज भी वो सारी कोशिश बेकार नहीं गई है. So, my dear students, so it is clearly telling us that we must perform like a best persons. क्योंकि ethics और values में अगर आए बेटा, तो हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि हमने एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है और एक दूसरे की किस तरह हमने मदद करनी है. If I can ease one life the aching or cool one pain. If I can ease one life the aching, अगर मैं किसी ऐसी जिंदगी, life the aching mean वो जिंदगी जो वो इंसान जो तकलीफ में होते हैं, दर्द तकलीफ सह रहे होते हैं, अगर मैं उनकी किसी एक के लिए भी आसानी का जरिया बन जाऊं,
सो और कूल वन पेन, या किसी को एक दर्द में मीन्स अपनी दर्द या अजियत में अगर मैं उसे राहत पहुंचा सकूं तो मुझे हरगिज भी अफसोस नहीं होगा कि मेरी जिंदगी बेकार गई. Next, what she's saying, or help one fainting robin unto his nest again. So, fainting robin. Robin क्या होता है बेटा? It's a red color bird, sparrow. एक red color की एक sparrow होती है, बहुत खूबसूरत सा परिंदा है ये robin. तो fainting robin यहाँ बेटा उसने personification की है, सिमिली इस्तेमाल की है, और ये वो कंपैरिजन कर रही है कि अगर वो ऐसे हुआ कि अगर वो किसी एक बेहोश परिंदे को, फेंटिंग रोबन बेहोश परिंदा, ऐसा परिंदा जो नई नई उड़ान सीख रहा हो और उड़ नहीं सकता, गिर जाता है, और उस परिंदे को उठा के अगर मैं वापस उसके घोंसले में रख देती हूं तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. उसने यहाँ परिंदे के लिए मिसाल बनाई है, परिंदे को इंसानों से तशबीह दी है कि अगर हम जब इंसानों की, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की केयर करते हैं, मदद करते हैं, उनको राहत पहुंचाते हैं, उनकी तकलीफ में उनको मदद करते हैं, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा खुशी और सुकून का बायस बनती है. तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये क्या बताया जा रहा है सारा, ये काइंडनेस की सारी उसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो बताई जा रही हैं कि अगर हम किसी के साथ मेहरबानी करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, तो उससे हमें खुद को भी राहत मिलती है, हमारा दिल, हमारा दिमाग सुकून में होता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है. तो यहाँ वो परिंद, और ना सिर्फ हमारी जो काइंडनेस और उसकी जो हकदार है वो जस्ट इंसान नहीं है बेटा. बी कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, हमें इनके भी ख्याल रखना है. तो यहाँ इसलिए उन्होंने उसकी एग्जाम्पल दी है. सो वंस अगेन शी इज सेइंग दैट आई शैल नॉट लिव इन वेन, कि मुझे कभी भी फिर अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि मैं बेकार गई, या मेरी जिंदगी का मकसद जो है वो जाए गया, फजूल में गया. तो मुझे हरगिज भी इस चीज की तकलीफ या दुख नहीं होगा अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी के काम आ सकूं. तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ क्या सीखा? जी बिल्कुल, हमने सीखा कि हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से, इवन जानवरों से, परिंदों से, जो भी अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे इर्द गिर्द मखलूक बनाई है, हमें उनसे हमदर्दी का जज्बा रखना चाहिए. अगर उनमें से कोई किसी तकलीफ में है, दर्द में है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए. और इस चीज की तवक्को नहीं कि वो हमारे साथ कुछ अच्छा कर दे या ये कर दे, वो उस जात पाक के लिए कि ये सब करने से अल्लाह ताला खुश होता है, और जब वो जात पाक खुश होती है तो वो हमारे दर्जात भी बुलंद करती है, और हम पे रहमतों में, हमारी पे जो रहमतें बरसाती है तो उनमें भी इजाफा करती है. सो लेट्स कमिट टुडे विद मी दैट वी विल नॉट ब्रेक एनीवन्स हार्ट फॉर नथिंग, वी विल नॉट टीज एनीवन. ओके, सो दिस इज द लेसन एंड थीम ऑफ द लेसन, दैट this poem, short poem, 7 lines are there total, and what a deep message. ये 7 लाइनें बेटा अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखती हैं जो कि हमें आज पता चला. सो टुमारो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो विद अ न्यू लेक्चर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.